तो देखा मेट्रो स्टेशन एंड एस्केलेटर। चलो कम टू द आर क्वेश्चन नाउ। यहाँ पर देखो, लाइक इट वाज asked in NEET 2017. Let's read it. Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. So she walked up to that stationary escalator in time T1. तो प्रीति गई मेट्रो स्टेशन, वहां पर देखा कि एस्केलेटर काम नहीं कर रहा, तो वो चल के गई खुद से, राइट, इन टाइम T1. On other day, if remained stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time T2. दूसरे दिन वो चल रहा था अच्छे से। ओके, तो वो स्टेशनरी थी, वो रुकी, वो वहां पर ही रुकी और एस्केलेटर आगे बढ़ा, ठीक है, तो वो मोशन में था। तो तब वो, लाइक इट टेक्स टाइम T2 टू रीच दैट व्हाट आई कैन से, जो जो भी टॉप पॉइंट होगा वहां पर। देन टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर। सो दे आर आस्किंग अस कि एस्केलेटर भी चल रहा है और वो भी उसके ऊपर अगर चल रही है, मतलब वॉक कर रही है, तो कितना टाइम लगेगा उसे वो डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स से एक एस्केलेटर है यहाँ पर। ओके, अब ये एस्केलेटर ऐसे चल रहा है, ठीक। तो फर्स्ट दिन तो नहीं चल रहा था, तो पहले दिन ये खुद से वॉक करके गई यहाँ पर, राइट। तो तब उसे टाइम लगा T1। तो उसका स्पीड कितना होगा, लाइक द लेट्स से स्पीड ऑफ दैट प्रीति V1, दैट विल बी द एक्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम T1, राइट। देन दूसरे दिन अब एस्केलेटर चल रहा है, राइट। अब एस्केलेटर चल रहा है तो वो हाउ मच टाइम इट टेक्स T2। ओके, सो द स्पीड ऑफ दैट एस्केलेटर दैट विल बी द V2 विल बी x डिवाइडेड बाय T2, right? That V2 which means speed of the escalator. So उसने x distance इतना कवर किया divided by time T2. अब तीसरे दिन दोनों पे escalator is also like working and similar way that Preeti is also walking over that escalator. Okay, so तब तब उन्होंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो टाइम क्या होगा, सिंपल, लेट्स से द टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। सो लेट्स कंसीडर दैट T, okay, which means the speed, like what I can say, the time required when that Preeti is walking over the moving escalator, the third case, okay, so that will be the distance x divided by speed of the both in, okay। अब दोनों भी मोशन में है ना, तो V1 plus V2, I hope the thing is clear, right? Okay, so x, let's put the, we already have that value of V1, that is what, x divided by T1, plus V2 is what, x divided by T2, right? We can take x common, you will get that time, that will be x here, it will be 1 upon T1 plus 1 upon T2, right? So the x will get cancelled here. We'll simplify it and then we'll cancel, or we can cancel here only. We'll get 1 upon that inverse. So let's simplify it. It will be T2, okay, T2 plus T1 divided by T1 T2. So inverse of the T2 plus T1 divided by T1 T2 है, तो T क्या होगा आपका, इनवर्स लिया इसका, तो the T will be T1 T2 divided by T1 plus T2. Right? Okay. So we're having that C is what our final answer. Clear? This one and here. All right. Bye bye.